मैं अभी I will call upon Zinia Zaigam. Zinia Zaigam Sahiba. Zinia Sahiba. Thank you, Mr. Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Speaker, Raja Pervez Ashraf Sahab, honorable members of Parliament, my dear friends from various schools, Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. I am Zinia Zaigam, representing Beacon House Civil Lines Branch, Rawalpindi. At the onset, I would like to thank you, Mr. Speaker, for giving us, the little humans of Pakistan, the opportunity to be heard today. Never before has this House witnessed a children's parliament in its 75 years history or seen an 11-year-old like me addressing this chamber. So this initiative really is unprecedented and deserves utmost appreciation. Mr. Speaker, I would like to go exactly 75 years back to the 12th day of August of 1947, when the official language of this house used to be English. And it is in the spirit of celebrating that very day that I have chosen to speak in this language. Mr. Speaker, the theme of today's convention is Azme Ali Shan, the symbol of high resolve. While I thank this august house for conferring this title onto us, may I beg to respectfully ask this house if it has ever truly resolved to alleviate the plight of children, the Azme Ali Shans of this country. Mr. Speaker, on one hand, we vow to end child bride culture, yet can't decide amongst ourselves if 14, 16 or 18 is the marriageable age cap of a child. We speak volumes about Article 25A, the right to education, yet end up being the country with second highest out-of-school children in South Asia. We hear promises of equal opportunities, but a look around my side of the aisle is enough to establish the reality of that claim. We hear slogans of ending child labor and street beggary, but a glance at the road outside or a peep into our households tells a different story altogether. I ask, Mr. Speaker, why does it take the brutal murder of children like Zainab or the media trial of cases like Dua-e-Zehra to jolt the policymakers that we, the children, too exist in this society whose very rights too need protection? Is there any unsaid rule that lesser the age, lesser the attention, and lesser the resources be spent on you? Must I remind this house that 75 years ago, on this very day, the Constituent Assembly of Pakistan had only 2 agenda items on its orders of the day, one of which was appointment of committee on fundamental rights of citizens and minorities of Pakistan. Rights of citizens, Mr. Speaker. It did not say rights of adults, elderly, men, women, or transgenders. If the state and constitution do not discriminate us on these grounds, why do policymakers then? Mr. Speaker, while I leave this question with all of you, I would like to conclude by requesting a commitment and resolve from this House. Let's pass a resolution today to make this Children's Parliament an annual feature of proceedings of this House, where every year children from the lengths and breadths of Pakistan are invited just to be heard. I would further propose that a parliamentary forum on Child's Rights Caucus may also be established in the National Assembly of Pakistan so that our esteemed legislators team up to work on policies and legislations with a child-centric lens. In the end, I hope, Mr. Speaker, that both my suggestions would be taken up and adopted by my Parliament. Rehbare Tarakki Kamal. With this, I thank you once again for this profound opportunity.
Master Muhammad Ismail, the next speaker. Master Muhammad Ismail. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और मैं पाकिस्तान स्वीट होम से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं 9th क्लास का तालिब इल्म हूँ। आज मुझे एजाज़ हासिल है कि मेरे पापा जानी ज़ुमर खान हिलाल इम्तियाज़, जो हज़ारों बच्चों की दिलों की धड़कन है, मेरे साथ इस ऐवान में मौजूद हैं। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। जनाब स्पीकर, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका अनवान है अज़्म आली शान। ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ज़मीं कोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे ऐ नादानो, वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे ऐ नादानो। इसी को जिंदगी मानो कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। जनाब स्पीकर, तारीख का मुताला करता हूँ तो खुद को कई बरस पीछे महसूस करके मैं देखता हूँ अज़्मो यकीन की तस्वीर, शहीदों के खून से लिखी गई तकरीर, कायद की अनथक मेहनत की तस्वीर, इलामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर। मेरा पाकिस्तान जुल्म जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के रक्शे पर रोशनी बनकर उभरता है तो दुश्मन जलकर कहते हैं चंद माह चंद साल ना रह पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। तारीख़ ये मंजर देखती है कि हम अल्लाह ताला के फजल करम से ना सिर्फ कायम और दायम हैं, बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद से साबित कर दिया कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जनाब स्पीकर, हम हर महाज पर साबित कदम रहे हैं और तरक्की के मनाजिल तय करते आगे आगे और आगे। हम बहादुरी में टीपू सुल्तान बने, वलीद की तलवार बने, फरूक की ललकार बने, हम नगमे गिरी में फिरदौसी बने, हम साज बने तो बुल्ले शाह, हम सोज बने तो वारिस शाह, हम तालीम के मैदानों में सर सैयद अहमद खान बने और यतीम बच्चों के लिए ज़ुमर खान बने और हम इंसानियत की खिदमत के लिए अब्दुल सत्तार कीदी बने। हमने दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा कर दिया और आज भी हमारी अफवाज अपनी सरहदों पर सी सप्लाई द्वार बनकर खड़ी है और दुश्मन को ये पैगाम देती है, जो जड़ से जबर मिटाती है दुश्मन को मार भगाती है। हम मौत को आंख दिखाते हैं, दुश्मन से कब घबराते हैं। इकबाल ने भी फरमाया हम तौब से भी लड़ जाते हैं। जनाब सदर, हम जिंदा कौम हैं, हम इस मुल्क की आन बान शान हैं, हमारा वतन है तो हम हैं। शहीदों की ज़मीं है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मीं है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा। और मैं हाउस को बताना चाह रहा था कि हमारा ये बच्चा जो है ये पाकिस्तान स्वीट होम से इसका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान स्वीट होम के जनाब ज़ुमर खान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी सरपरस्ती में इस मुल्क के हज़ारों यतीम बच्चों को तालीम, रहाइश और तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। इस मौका पर मेरी आप सब स्कूलों के मालकान से गुजारिश है कि आपको अल्लाह ताला ने बड़े वसाइल अता किए हैं, तो अल्लाह की रज़ा की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आप अपने स्कूलों कॉलेजों में कम अज़ कम 10% नशिस्तें यतीम बच्चों को दें। इन बच्चों के मुकम्मल तालीमी अखराजात मुफ्त करें। इस तरह मुल्क भर के लाखों यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम मिल सकती है, उनकी ज़िंदगियाँ संवर सकती हैं और अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाएगा।
महरमा खुरम राजा साहिबा। महरमा खुरम। Assalamu alaikum. My name is Mehrma Khurram and I am from Treehouse School, Islamabad. Today I will be talking about the Independence Day of Pakistan. There were many great people who helped to form this beautiful country. One that will come to mind is Quaid-e-Azam, also known as Muhammad Ali Jinnah. Quaid-e-Azam served as the first Governor General of Pakistan. He worked to establish the government and policies. Quaid-e-Azam was a selfless and dedicated leader. He also sought the political union Hindus and Muslims, which earned him the title of the best ambassador of Hindu-Muslim unity. You may think, who gave Muhammad Ali Jinnah the title of Quaid-e-Azam? Maulana Mazharuddin gave this title to Muhammad Ali Jinnah in 1938. We all Pakistanis should also follow the footsteps of our great leader and should work hard day and night for the prosperity of Pakistan. Thank you. Thank you, Mehrma Khurram. Now I call upon Azika Shahbaz. Azika Shahbaz Sahaba. Yes. ज़मीन से आसमान तक परवाज़ करती हूँ, ज़मीन से आसमान तक परवाज़ करती हूँ। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ खुदा के नाम से करती हूँ। ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा। ज़मीन खोई तो तुमको मकान कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नदानो। इसी को ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी मानो कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं जब तरीक़ा मुतालिया करती हूँ तो ख़ुद को कई बरस पीछे महसूस करके मैं देखती हूँ, जी हाँ जनाब स्पीकर, मैं देखती हूँ कि अज़्म यक़ीन की तस्वीर, शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, कायद की अनथक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के ख्वाब की तबीर। मेरा पाकिस्तान, जनाब स्पीकर, मेरा पाकिस्तान लहू लहान जब जुल्म और जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर रोशनी बनकर उभरता है तो लोग जलकर कहते हैं, जी हाँ जनाब स्पीकर, लोग जलकर कहते हैं कि चंद माह और साल से ज़्यादा जम ना पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर आज तारीख ये मनाजर दिखाती है कि हम अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ कायम दायम है, बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद से ये साबित कर दिया कि जब अपना काफिला अज़्म यक़ीन से निकलेगा, कि जब अपना काफिला अज़्म यक़ीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जनाब स्पीकर, हम हर महाज पर साबित कदम रहे और तरक्की के मनाजिल तय करते आगे और आगे बढ़ते चले गए। हम जुर्रत और बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फरूक की ललकार बने, क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, इस कोश में जहांगीर और जान शेर बने, तालीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने, और जब बात मुल्क की हिफाजत और सहमियत की आई तो हम मेजर अजीज़ भट्टी और मेजर तुफैल बने। हमने इंसानियत की खिदमत के लिए सर सैयद अहमद खान बने। हम कायद के सिपा सलार, तीर और तलवार बने और दुश्मन के लिए एक ललकार बने। हमने दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया। हमारी अफवाज आज भी अपनी सरहदों पर सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है और दुश्मन को ये पैगाम दे रही है कि हम वो कौम है। जनाब स्पीकर, मेरी बात पर गौर कीजिएगा कि जब किस्मत के दरवाजे खुले हम सब पर, कि जब किस्मत के दरवाजे खुले हम सब पर, लोगों ने दौलत मांगी और हमने वतन। जनाब स्पीकर, हम जिंदा कौम हैं और जिंदा कौमें अपने वतन की आन मान और शान के लिए जान की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करती, क्योंकि हम जिंदा कौम हैं, क्योंकि हम वो कौम हैं, हम वो हैं जो जड़ से जुबर मिटाती है और जुल्म को मार भगाती है, जो जड़ से जबर मिटाती है और जुल्म को मार भगाती है। हम मौत को आंख दिखाते हैं, हम तैग से कब घबराते हैं। इकबाल ने भी फरमा दिया, हम तोप से भी लड़ जाते हैं।
मैं अपनी तकरीर का एहतमाम एक शेर से करना चाहूँगी। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। शुक्रिया। Thank you. Safina Mahmood Sahiba, the next speaker. Honorable Mr. Speaker and distinguished guests, Assalamu alaikum. My name is Safina Mahmood and I am from TNS Beacon House, Lahore. Pakistan is not just a piece of land on a map. It is my pride, my home. Pakistan has achieved many successes, but in the field of education, social issues, there are some mountains yet to be scaled. Education is a foundation upon which you can eradicate so many evils that plague our society. Creating awareness for the importance of education for both sexes should be mandatory, not just through schools, but also be reinforced through social media and even through the parliament. Uniting to work as one for the educational betterment should be the primary driving force of every institution. The education sector, whether private or public, should induct teaching the Constitution of Pakistan's curriculum. Mr. Speaker, our Constitution is not only a set of laws, it is the very fabric upon which our nation stands. Physical training was a mandatory part of schooling once, where students were not having gadgets, but in fact were a part of a system whereupon horse riding, cricket, hockey, etc. were a part of school. This would encourage interactions among the students as well as positive health benefits for the students involved. Lastly, I would like to touch upon women's rights in this forum, especially the inclusion of women among the most prominent ranks of this country's politics, armed forces, and bureaucracy. We have three wondrous examples of this. Mohtarma Shahid Benazir Bhutto, the first female Prime Minister of Pakistan, but also of Asia. Lieutenant General Negar, the first three-star general to have reached his peak. Our Honorable Fahmida Mirza Bibi, the first female Speaker of the National Assembly. We are a young nation, but I envision that inshallah on our 100th year Independence Day, we will be among the greatest nations of the world, as I can see a bright, successful future for this wonderful country of ours. I will end this note that it has been an honor to have stood before you, Mr. Speaker, and all these distinguished parliamentarians. May Pakistan prosper as always. Ameen. Pakistan Zindabad. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।